Hello everyone, my name is Indraseen Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session, because on today's session we are going to discuss again a very important topic, and that is breakdown in English communication. Yes, my dear friends, what is the breakdown? That while talking and communicating in English we often get stuck with the lack of words or something like that, which is not coming directly or immediately in the mind. So because of that reason, that is called the kind of a breakdown point, and we really need to come out of that. And because it makes all of us uncomfortable before others, because somewhere down the line we often feel that it's happening just because I'm not having that kind of a command over communication, especially English language. So we really need to come out of it. So what exactly should be the steps and how exactly we can come out of it, we'll just try to discuss in today's session. सो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रेकडाउन के ऊपर बात करने वाले हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन में. कई बार बात करने के दौरान हम शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, चीज़ें इमीडिएटली ऐसी लगती हैं कि जैसे ब्लैंक हो गया. वहाँ पे काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है कम्युनिकेटर के लिए. तो उस सिचुएशन को किस तरीके से हम हैंडल करें और ऐसी कोई सिचुएशन आए ही ना, इसके लिए हम पहले से किस तरीके की प्रिपरेशन करके रखें, ये जानेंगे हम आज के सेशन में. तो अगर ये प्रॉब्लम आपसे जुड़ी हुई है और आप भी इस तरीके की स्ट्रगल फेस करते हैं तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में. तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से. एंड द फर्स्ट ऑल, it's common. Yes, my dear friends, I don't know sometimes that why do people consider English in such a way, because see, we always consider it in a kind of a different way, because if you're considering it as a language, then it is quite common that even though if you're speaking something in your mother tongue, so in that case also that we tend to forget so many things, and we often forget so many things, but we don't create that kind of a scene, and such type of stress will never come in our mind because we are speaking and having conversation in our own mother tongue. So that is the reason because of which we don't take it in that way. But if it is happening in English communication, then definitely it is going to be a big deal for all of us, that how exactly it is happening, because I really need to avoid that. I don't want to be just feel shame before others, because if something like that will take place, then definitely it would be hard for me to manage. तो ऐसा क्यों सोचते हो आप? बिकॉज क्योंकि आपने इंग्लिश को एक अलग ही तरीके का एक क्रिएट करके रखा है, एक अलग ही सेक्शन में रखा है आपने. तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला ब्रेकडाउन इंग्लिश में ना हो, इसके लिए आप हमेशा ये रखो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत ही कॉमन बात है, कॉमन सी प्रॉब्लम है जो हर एक लैंग्वेज में होती है. सो इट इज हैपनिंग इन इंग्लिश, तो दैट्स नॉट अ बिग डील. तो इतना बढ़ाना नहीं है उसको, इतना स्ट्रेस में नहीं आ जाना है, इतना डिफिकल्ट नहीं मतलब कर देना है उसको. तो इट्स वेरी कॉमन एंड यू जस्ट नीड टू थिंक इट इन सच अ वे. My dear friends, our second point, which really is going to be useful for you, because that will help you a lot in order to just avoid the breakdown situation, especially in English communication, and that is use or pick up other line. Yes, my dear friends, it happens randomly and it happens with everyone. It was happening with me also when I was a struggler in terms of learning English communication at that time, that whenever I had a plan to speak something, though at that time if I forgot to speak the same line, so I was not able to just find out the other one. So because I was very much attached to that line, and that is because of the reason, and I was not able to frame the other statement. Now what exactly you need to do in the option, that you need to understand that even if you're forgetting a line, so there is a kind of alternative line for that, because we do, and it happens in other language, it happens in your mother tongue. Whenever you are trying to speak something in Hindi, and if you're forgetting something, so you find out immediately alternate option for that, and exactly in the same way you are going to express your views and idea. Same happens in English also, because see, what you need to do, that if you are forgetting something, so in that case you just need to find out the other line. So you just need to just do it in a quick way. These are the kind of qualities which you can see in the expert people who are quite expert in communication, even though means they are having the expertise, but they commit so many mistakes in terms of especially this point, that they often forget that what they are supposed to speak, but they just choose the other line in such a way, and the process is so quick that we don't realize it. So because it is happening just because of the practice and the continuous effort. So my dear friend, जो second point है उसमें आपको क्या करना है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हो और आप भूल रहे हो सडन कुछ, या जो आपने प्लान करके रखा था वो मिस हो गया आपसे,
या वो समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली आप क्या बोलो, सो उस केस में आप उसको सोचो ही मत, बिकॉज जब आप सोचोगे उस लाइन को तो वो क्या करेगा, आपकी फ्लुएंसी को किल कर देगा, आपको ब्लैंक कर देगा, आप ब्रेकडाउन की सिचुएशन में आ जाओगे। तो उस लाइन के बारे में हमें नहीं सोचना, तो जो भूल गए उसे नहीं सोचना है, उसकी जगह पे हमें कुछ और बोल के अपने थॉट को एक्सप्रेस करना है। सेम जस्ट लाइक एग्जामिनेशन, बिकॉज अगर आप एग्जाम में बैठे हो और क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आप बार बार उस क्वेश्चन पे ध्यान दोगे जो आपको नहीं आ रहा है, तो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो भी आप लिख नहीं पाओगे, बिकॉज टाइम उसमें आपका चला जाएगा। So in the same way that if you are getting something to speak and you have to have a conversation with someone, and if you are not able to find out the word that you have already prepared, so in that case you should go ahead and just try to find out the best alternative in that case. So you need to be mentally prepared for that, because this is something which is happening and it will definitely happen. So you need to be prepared for that. That's all I can say from my end. Not so, my dear friends, the third point is use common words. यस माय डियर फ्रेंड्स, कई बार मुझे ये समझ में नहीं आता कि बहुत बार लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश बोलने के दौरान कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जो सामने वाले को क्लियर ही ना हो, यानी उसे पता ही ना हो, और इसमें उनकी बहुत बड़ी महानता दिखती है, उन्हें ऐसा फील होता है। माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, इवन आई वाज इन द सेम काइंड ऑफ अ जोन, तो मैं भी ऐसा कुछ करता था। आई यूज्ड टू फाइंड आउट द क्रिटिकल वर्ड्स एंड आई ट्राई टू यूज इट बिफोर द पीपल इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग इंग्लिश, और जब नहीं होता तो मैं अपनी कॉलर बहुत अच्छे से टाइट करता था कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया। बट दिस इज समथिंग विच इज नॉट कॉमन माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज अल्टीमेटली इंग्लिश इज अ काइंड ऑफ अ लैंग्वेज, एंड इफ यू आर कंसिडरिंग इट एज अ लैंग्वेज, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉमन वर्ड्स का यूज ज्यादा होना चाहिए, ताकि आपके थॉट्स ज्यादा क्लियर हो, सामने वाले को आपकी बातें ज्यादा समझ में आए, और वो अपनी मतलब राय को या ओपिनियन को क्लियरली आपके समक्ष रख सके। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज मैक्सिमम कॉमन वर्ड्स ड्यूरिंग योर कन्वर्जेशन। और ये कॉमन वर्ड्स यूज न करने से क्या होगा, ब्रेकडाउन की सिचुएशन आएगी, बिकॉज कुछ आप ऐसे वर्ड्स यूज करोगे जो सामने वाला नहीं समझ में आएगा, यानी सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, फिर उसके एंड से क्या होगी, कम्युनिकेशन स्लो हो जाएगी, और फिर आप अपने एंड से कुछ और सोचने की कोशिश करोगे, जिसमें आप एक तरीके से अपने आप को असहज महसूस करोगे, फेल महसूस करोगे। सो दैट इज वाई इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, जस्ट ट्राई टू यूज मैक्सिमम कॉमन वर्ड्स in terms of having the healthy conversation, because that is going to just make that person feel convenient while having conversation with you, and that will help you a lot in order to avoid the breakdown situation which may occur in English communication. So my dear friends, the fourth and final point is be attentive. Yes, my dear friends, it is always seen that there are a lot of people who always have a kind of a casual approach while having conversation with someone. So in that case, what happens that if you're not going to listen to the person actively, so you might miss some side short of sentences and words. In that case, you may come in the breakdown situation, because ultimately you haven't heard that person properly. So in that way, it is not going to be possible for you to frame the appropriate word and the statement for that means for that person, especially in that context of conversation. So my dear friends, जब भी आप किसी से बात करिए, पूरी तरीके से अटेंटिव रहिए। अटेंटिव का मतलब एक्टिव रहिए, एक्टिव का मतलब लिसनिंग एक्टिव करिए, ताकि जब आप बेहतर सुनेंगे व्यक्ति को, तो बेहतर आइडियाज आएंगे आपके सामने, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होगी, क्या आपको बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कौन सा वर्ड यूज करना है, कौन सा वर्ड यूज नहीं करना है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और आप ब्रेकडाउन की सिचुएशन में नहीं आएंगे। सो ये जो फाइनल पॉइंट है वो यही है कि जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन करें, अटेंटिव मोड में हो, यानी एक्टिव लिसनिंग आपकी होनी चाहिए उस दौरान। सो आई होप कि ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये आपकी हेल्प जरूर करने वाले हैं आपको ब्रेकडाउन की सिचुएशन से बचाने के लिए और इंग्लिश में आपको और ज्यादा कंफर्टेबल करने के लिए। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू क्रिएट अ फैमिली वेयर एवरीबॉडी इज गेटिंग द इक्वल चांस एंड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। सो दिस इज इन द सेन पांडे साइनिंग ऑफ, एंड आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना ना भूलिए जॉब सेंटर। थैंक यू।